Hello friends, I am Parvinder RANDHAWA from IBSL India. You are watching my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru. This is my writing class. In this I'll work on writing and I am going for some of the basic things in this writing. Right, and I am going to work on the thesis statement, that how to work on that one, that how to write thesis statement, how to write the argument led statement. So on this I am going to work right in this video. So, and I think so this will help you a lot in your writing task, in the format of your writing task, that how to structure the things, how to work accordingly. It will help you a lot. Just concentrate. So let's work word by word here. So this is the tips on writing task 2. Okay, and I'm going to work on the thesis statement. Fine. If the writing task 2 is based on the agree or disagree, so this type of essay that demands from you the thesis statement, this essay demands. Fine. Agree, disagree. Now, and what other type of essays? If the essay they demand from you that do the advantages outweigh the disadvantages, right? Advantage outweigh the disadvantages. This again demands the thesis statement. It doesn't mean that you can't write argument, but they demand from you thesis statement. In this video, I'll also just try to let you know that how to write thesis statement, what kind of words we have to use, because always there is a kind of, we can say that, controversy in the mind of the people, that what kind of writing we have to do. So what is thesis? What's the main thing of writing a thesis statement? That's I'm going to work. So if the task is based on agree or disagree, write. If the task is based on the advantages and disadvantages, write it. Right. If the concept of the task, let's go to the third one. It says that discuss both views and give your own opinion. If this type of task is there, so please don't go with thesis statement. Here write only the argument. Fine. So it means one thing, so don't get puzzled. If there is agree or disagree, you can write this, right? That argument is acceptable, but you can write thesis, no problem. If the statement means it demands from you, so here the thing is that, so argument I can write, no problem, but it requires from you the thesis. It requires thesis plus you can write the argument, no problem. But here don't write thesis. It requires only argument from you. Remember this thing. If this type of essay is there. Now let's go to the fourth. In fourth, what we have to do, if they are saying what are the advantages and disadvantages of this approach, right? If this type of essay is there, so what it requires? It requires only the argument led approach. Don't go with here, that is thesis led approach. So this is the point. If the essay is based on problems and solutions, again it requires from you
argument led approach. Don't go on the thesis led approach. So it means number 1 and number 2. This is thesis led statement here. Number 3, number 4, number 5, it's an argument. So this is a difference here. 3 here, 4, 5 argument led. 1, 2 thesis plus argument. Both are acceptable here. Now what do you suppose, what is the mistake here mostly people they do? The thing is that suppose if you will write here thesis type of statement, naturally it will be marked in terms of negative sense and it will affect your band also, please. So that's the thing here. Whether you are sitting in any exam, just like it's in any, we can say English test, it's maybe your TOEFL, IELTS, PTE, CEL, PIP, any kind of test. So thing is same. Now let's work on this one. How to work on thesis here. So how to work on thesis? What are the words we can use which maintain this language? So I believe this is a point here. You can write this. This is the part of your thesis statement or your thesis statement. In my opinion, because always there is a controversy in the mind of the people that how to write thesis, how to write thesis. My teacher says write thesis. What is thesis? This is the point on which I am going to work. Right? In my opinion, I totally disagree with. So this type of language, it maintains your thesis. So it means you can write this type of language in agree, disagree, in advantages and disadvantages. Please do not write in number 3, number 4 and number 5. Now what is the argument led language? Now what is that? So let's work on that also. So this is page number 1. Let's go to page 2. Now what is its right? What is this? One. Am I right? Check it please. Am I right? I don't think so. Right? So this is the point here on which we are going to work. Now I am right. I think so. Fine. Now what kind of language it is? It is generally considered that. Right? This is my argument led approach. So this is the thing here. Second, many people think. Third, it is widely accepted that fine. So this is a point. It means argument I have to write on the first page we discussed 3, 4, 5. Thesis plus argument I have to write 1 and 2. This we discussed before. Right? Now let's write one thesis statement. Let's do the example also. I am going to write one or two statement. I will try. So let's make the thesis here. In my opinion, speaking skills have why S is there, right? Definitely degrade
degraded in recent years. So this is my a kind of thesis statement. Now next, frankly, comma, I find some notes or texts which are handwritten almost impossible to read. Suppose this topic is on the speaking, or we can say on any generation gap, so we can work on this manner, right? And this topic is basically it's on this one, that handwriting skills, or we can say on the computer skills. So we can write this kind of language, but these topics are based on agree disagree thing, right? And second thing, or maybe these kind of topics are related to benefits or limitations. So this is a thing where we have to use the thesis statement. Means it's, I want to say that we have to use. The thing is that what I told you in the starting. So next is my, what kind of, why I'm going to do this one, argument, right? I have to check my page 1 also regarding this argument. In this case, what I'll do, so it is certainly likely that if this money were invested in, so any type of, there may be any kind of topic that is related to discuss both views or give your own opinion, or any topic what I told you, so we can use this type of line, and these words, it is certainly likely that these are the part of argument, and these words that I find, in my opinion, part of my thesis statement. So this is your thesis statement, my dear, right? So, and the example of your this one, that is argument led approach. So this is a point here. Now let's go to the page number 3 here, because I have to do some more work. Now while going with the thesis essay, what I have to do, that I am going to work on this one while going on thesis essay. Suppose I have to write thesis essay, right? So what I'll do here, what kind of language I have to use, that I told you. So main thing which we have to note here, or kind of star, I don't know how to make a star, right? State your opinion in an opening paragraph. So this is the point here. We have to state our opinion in the opening paragraph. This is the main point here, that is of my thesis essay. So opening means, you can say that body para 2 also, even if I can go with the introduction also, I think so that I will try to tell you in this case. It's a long video, I think so, I am not sure, because it depends. And second is your argument. In this case, write your personal opinion, right? Here we have to write in the opening para. Here we have to write in the conclusion. So this is the difference here. Fine. This is the main difference on which we can work here. It means it requires something, this one in the opening, this requires something at the last, that is the last para. So here in this case,
Now what they demand from you in thesis answer, what they demand, what the examiner demand from you in thesis answers, right? What is the demand? They demand that you should state your opinion, you should state your opinion and the things in a proper manner. That is the demand. The examiner demand that you should state your opinion. What do you want to write? Write in a proper manner. Okay, this is the first thing on which. Second, sport. It means you have to write, sport your opinion. So this is second demand. Third, the assessment is based on, it's based on your presentation. So this is the demand of an examiner when you write a thesis answer. So this is the demand. When you go in argument based answer, right? When you go on this one, that is argument. Now there the state sport, it means you have to give relevant example also to sport, right? And it's on your presentation also, how you present. Now here the word is changed. Check the technicality of the word. How means your procedure. You can make a summary or summarize. Fine. And evaluate the argument. 1 minute. Logically. Now after it means you have to provide some logics here. So this is the main difference in the argument and thesis, right? So it's logically what to sport both opinions with clear evidence. It means here you have to give clear evidence. That is, you can work on the research based work also. Any kind of research you can write here. So this is the point. Now let's go to next page. That's 4. This is the point on which we have to make, right? Now I'm going to say something to you that how to write introduction in a thesis slide. And for the introduction there is another video. You can check that video also. So here I'm going to write just how to write. I'm not giving you an example, but I'll tell you only. So how to write? It's introduction. Fine. In a thesis lead, that is your approach. So let's work on this one. First of all, make a general statement. And in next video, I'll try to write some of the examples also, but I'm not going to do in this one. Make a general statement. Means whatever is the topic. Do not copy. This is the main point here. The question. If you copy it, naturally you will get the problem. Right? Now, when you have done it, then write
or include, we can say, your thesis statement. It means your opinion. So this is the point. How to write introduction. And second thing here, how to write and justify your opinion. So this is a heading second. How to write and justify opinion, or we can say how to present, right? How to present. So this is a point. So here I can work with any kind of research work, or I'll provide, that is data. This thing I'll take. Second, I'll go with any kind of if sentence. I'll write if sentence. Second point. Third, I will provide any kind of reason. Even if you can check my complete writing video also. If you go to writing playlist, you can check complete writing video. In that I have written the complete task, right? And I have to give an example. So when you give this kind of things, naturally you will present your writing in a proper manner, right? So in this way you can easily make, right, how many, 1 2 3 4 sentences. So this is a way that you can structure your essay in a better manner. Now one thing, there is also a kind of always a discussion that in a case of agree or disagree or any kind of topic, I should go 100% on one side or not. What I believe, you can go, right? But condition is there. But a good answer is that, right, in which both sides are explained. So I mean that to be a good answer. So you can do one thing also, just check the writing task 2 statement. Then you can make in this manner 51-41, 70-30, 60-40, 80-20, 90-10. But don't go with 100-0. You can write, examiner has no problem. But a good answer, what is a good answer? That is any kind of ratio you have to maintain. Because nothing is perfect in this world. Remember this thing. So you can write accordingly. Fine. So this is the point that I have done in front of you. And you are watching my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru. I try to explain some of the basic facts of a thesis statement and the argument statement. Right, how to write, how to work on it, and I try to explain it in an effective manner, and I think you will grasp it properly. Thanks for watching this video. You are watching my YouTube channel, that's Parvinder RANDHAWA Guru. Please like, subscribe, and comment on this channel. I am always with you. So now my English session is over. Let's go with Hindi. यहाँ जो हमने आज डिस्कस किया है वो टिप्स के ऊपर किया है कि राइटिंग टास्क 2 में अगर किस टाइप का ऐसे आए तो हमें थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि एक हर किसी के एक माइंड में क्वेश्चन होता है, इवन टीचर्स भी हमें गाइड करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट लिखनी चाहिए. सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे कहाँ लिखनी चाहिए, जो हमने डिस्कस करना है. सेकंड, और किस टाइप की होती है थीसिस स्टेटमेंट, है क्या, उसका बेस क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है. तो जैसे एग्री डिसएग्री है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट मांगता है. इसमें आप थीसिस भी लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो, राइट. जब आ जाता है आपका टॉपिक जिसमें वो राइटिंग टास्क 2 में कहते हैं डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, तो इसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट तो डिमांड है. सेकंड, ये आर्ग्यूमेंट भी मांगता है,
राइट। बट इसमें दोनों में आप थीसिस लिख सकते हो। अगर आ जाता है आपका टॉपिक डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, तो ये सिर्फ आर्गुमेंट बेस्ड होता है, इसमें आप थीसिस को अवॉइड कीजिए प्लीज। और जो फोर्थ है व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये भी आर्गुमेंट लेड है, इसमें भी आपकी थीसिस जो है अवॉइड है। इसी तरह जो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस आ जाते हैं वो भी आपका ये वर्कआउट करना है आगे ना। हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट पे, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। आई बिलीव लिख दिया आपने, इन माई ओपिनियन लिख दिया, आई टोटली डिसएग्री विद लिख दिया, ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। तो एक कोई बड़ी चीज नहीं है थीसिस। काफी स्टूडेंट्स को इग्नोरेंस है इस चीज की, वो कहते हैं व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट इज नॉट अ बिग थिंग। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे भी काफी क्वेश्चंस किए गए, राइट, कि थीसिस में एक जड़ है, थीसिस नथिंग एल्स, बेस है एक। आई बिलीव लिख दिया, आपकी थीसिस बन गई। अब आर्ग्यूमेंट वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है, इट इज जनरली कंसीडर्ड दैट, पता क्या है, देखो हाफ नॉलेज कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर मैं कुछ लिख दिया क्योंकि क्या होता है कि सब ना सिस्टम अपना अपना हर किसी का पढ़ाने का, और सारे अपनी जगह अच्छे होते हैं, बट इंग्लिश इतनी वाइड लैंग्वेज है कि आप हमें खुद मतलब कहना चाहता हूं कि आप कौन सा वर्ड कहां यूज करना है, आपको हर चीज सिखा देती है। टेक्निकलिटी ऑफ मैं वर्ड्स देखता हूं तो बहुत कुछ समझ आता है, टेक्निकलिटीज को मैं इग्नोर करता हूं तो मैं काफी कुछ लिख सकता हूं, और उसमें भी टेक्निकलिटी बन जाती है, राइट। आई एम बेकिंग माई चपातीज फाइन ऑन द बर्निंग इश्यूज ऑफ माई कंट्री, एक लाइन मेरी है, आई एम बेकिंग माई चपातीज, राइट, और पॉलिटिशियंस आर बेकिंग चपातीज ऑन द बर्निंग इश्यूज, राइट, ऑफ माई कंट्री। तो इस तरह की आपकी लाइन जो है, इस टाइप की लैंग्वेज, चलो ये मैं लॉफ चेंज कर देता हूं इसको, बेकिंग लॉफ ऑन द बर्निंग इश्यूज। अब बर्निंग में आईएनजी लग गया आपका, राइट, इश्यूज ऑफ माई कंट्री। तो ये मेरी एक लैंग्वेज आ गई, पॉलिटिशियंस आर बेकिंग लॉफ ऑन द बर्निंग इश्यूज ऑफ माई कंट्री। तो ये मैं वही बात है ना, देखो यहां पे जो मैंने फ्रेजल वर्ब को उठाया, बेकिंग लॉफ को आया, बर्निंग इश्यू सबको समझ आ जाएंगे, बेकिंग लॉफ, लेकिन यहां पे इनडायरेक्ट मीनिंग कुछ हो रहा है बेकिंग लॉफ का, राइट, कि अपना फायदा उठा रहे हैं। अब वही बात है ना कि आप लोग पजल हो जाते हो कि मुझे तो कहा था कि इन कंक्लूजन लिखना है, मैंने ओवरऑल लिख दिया, या ओवरऑल लिखना था। तो हम लोग इसलिए पजल रहते हैं इस लैंग्वेज में, असली पॉइंट नहीं समझाता है। असली पॉइंट हमारे को जो समझाता है वो आपका रीडिंग समझाता है। अभी मेरी एक वीडियो पेंडिंग है, मैंने इसी चीज पे वर्क कर रहा हूं, और एक मेरा लिसनिंग समझाता है, जहां पे हमारे हैंड में सिर्फ सॉल्यूशंस हमें करने होते हैं, सब कुछ उन्होंने हमें दिया होता है, हमें रोबो की तरह वर्क करना होता है, फाइन। लेकिन राइटिंग मेरे हाथ में है, अगर मुझे रीडिंग और लिसनिंग अच्छी तरह समझ आ जाती है, मेरी राइटिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी, मेरी स्पीकिंग अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। सो दिस इज द पॉइंट है। तो आर्ग्यूमेंट पे आते हैं हम, जैसे इट इज जनरली कंसीडर्ड दैट, मैनी पीपल थिंक दैट, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड, ये सारी मेरी आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज होगी। और आप देखिए और भी वीडियोस हैं, हाउ टू राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैंने बनाई है एक वीडियो, और भी मैंने बनाए हुए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, कैसे सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब्स को कैसे लिखना है, वो सारे आपके इस टाइप के आ जाते हैं सेंटेंसेस। इसकी तो मैं बहुत वैल्यू मानता हूँ रीडिंग में, लिसनिंग में, और ये आपके राइटिंग में, राइट। अब थीसिस जो मान लो मैं जनरेशन के ऊपर टॉपिक लिखता हूं, तो मैंने थीसिस का एग्जांपल लिख दिया, इन माय ओपिनियन। इन माय ओपिनियन लिख के मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, स्पीकिंग स्किल्स हैव डेफिनेटली डिग्रेडेड इन रिसेंट ईयर्स। इसी तरह मैंने कहा, फ्रैंकली आई फाइंड सम नोट्स और टेक्स्ट विच आर हैंड रिटन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड। तो ये बात कह दी। जब मैं आर्ग्यूमेंट में चला गया तो हैंड राइटिंग के ऊपर टॉपिक है, जब मैं कह दूं कि कंप्यूटर की टाइपिंग अच्छी है जो हैंड, तो मैंने लिख दिया, इट इज सर्टनली लाइकली दैट इफ दिस मनी वर इन्वेस्टेड। तो ये चीजें आ जाती हैं आपकी। तो इस तरह आपकी लैंग्वेज जो है चेंज होगी, आपके सामने है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट हियर जिसके ऊपर हमने वर्कआउट किया है। सो ये मेरा अभी तक थीसिस और आर्ग्यूमेंट अप्रोच पे चल रहा हूं। आगे मैं चला गया, जब थीसिस ऐसे में क्या डिमांड है, वो कहता है अपना ओपिनियन दो ओपनिंग पैरा में, चाहे आप इंट्रोडक्शन में लिख दो, चाहे सेकंड पैरा में, जो बॉडी पैरा 1 बन जाता है। आर्गुमेंट में कहता है कि आपने अपने पर्सनल जाना है ना, तो सिर्फ
लास्ट में चले जाओ, कंक्लूजन में चले जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। थीसिस के आंसर्स कि मैं क्या कहता है स्टेट करो अपने ओपिनियन को, सपोर्ट करो, असेसमेंट उसके ऊपर आपकी बैठी हुई है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। आर्ग्यूमेंट में क्या कहता है, यू कैन समराइज एंड इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट लॉजिकली, सपोर्ट करो ओपिनियन विद क्लियर एविडेंस। अब हम लोग आगे जाते हैं पेज नंबर 4, पेज 4 पे इंट्रोडक्शन जो भी लिखनी है एक जनरल स्टेटमेंट बनाओ, क्वेश्चन को कॉपी मत करो और अपनी थीसिस स्टेटमेंट ओपिनियन राइट। अब आप राइट और जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, डेटा दो, रिसर्च वर्क करो, राइट उसका लिखो, इफ वाला सेंटेंस लिख दो, एक रीजन दे दो, एन एग्जाम्पल दे दो, 4 आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब ये आ जाता है क्या मैं 100% एग्री हो जाऊं या नहीं। अच्छा आंसर वो है जो दोनों तरफ चलता है, इसलिए मैंने परसेंटेज लिख दी। कोई भी परसेंटेज मेंटेन करो, अपने माइंड के अकॉर्डिंग करो, एक अच्छा आंसर बनाओ। तो ये था मेरा वर्क इसके ऊपर, एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, दैट्स परविंदर रंधावा गुरु यूट्यूब पे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, फाइन, एंड यू विल गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। मैं जितना भी होता है ट्राई कर रहा हूँ। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो वो इसी चीज़ पे है कि मुझे जो लैंग्वेज है उसको कैसे उठाना है, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव बने। जैसे मैंने यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे माइंड में मैम ने लिख दिया कि पॉलिटिशियंस आर बेकिंग, राइट, तो ये चीज़ है। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अबव ऑल दिस वीडियो, ये वीडियो मैंने धीरे धीरे बनाई है और बड़े हार्टली बनाई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस वीडियो प्लीज। थैंक्स वंस अगेन।